Every corner is filled with the bikes. I think more than 300 Harleys in one parking bay. Today I am pushing back because second day इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो एटलीस्ट मैं आज घर पहुंच जाऊंगा, तो आई हैव माई संडे टू स्पेंड विद द फैमिली. अभी आई एम गोइंग टू द गोल्डन ट्यूलिप अगेन, तो देयर इज़ अ रैली वेयर ऑल द Harleys will lined up, just take a Gedi route across the city. So I just participate in that Gedi route and just have a view of hundreds of Harley roaring on the road. So it would be a great feeling. I think more than 500 Harleys would be there. Look at the tour, few more bikes. Mr. Bhaskar. Let's see the more bikes, more bikes, more bikes, more bikes. Bikes. CVOs, look at the CVOs, man. Damn cool. So we will flag off from here. Then from here, the entire sort of bikers will move. Look at the number of bikers, man. Amazingly. That's the reason from last 10 years continuously I am coming to this NHR, because there is no place where you can see these number of bikers, especially the Harley riders. So we just starting a rally. So we 200 Harley bikers are going to one place just to showcase our strength to the community for the brotherhood. Now look at the number of bikes we have. There are almost 200 bikes roaring to a certain location. Wow, look at this bike, man. Good. Wow. Oh, Varun is all set to roll. I get a feeling, ना मतलब इतनी सारी bikers के बीच में when you ride. So finally we rolled. I don't know, mic की sound कैमरे में आ भी पाएगी नहीं आ पाएगी. The bikes are so loud. I need to keep a distance between the bikes because बाइकर्स अभी आ रहे हैं और वी स्टार्ट मूविंग. यार इट्स गुड टू राइड अमंग द राइडर्स. हाँ, लुक एट द बाइकर्स, मैन. डैम, they all are getting piled up here. Just look at that. Let's start.
entire traffic has been stopped. Everything has been managed. Even the cops are helping us out to just pass through each and every road. And the entire road has been owned by the Harley riders. Wow. It's kind of a road show. ये हार्ले का एक road show है एक तरीके से. When all entire set of bikers on a different bike just came together for a brotherhood and just rallying along with the other bikers. आज कोई लाउड एग्जॉस्ट का चलान नहीं करने वाला है. जिसको जितना लाउड एग्जॉस्ट लगा के चलाना है, चीखना है, दे कैन. ये अब मनी माजरा से आई थिंक वे टेक आवर डे टू. 6 साल बाद चंडीगढ़ आया हूँ. कितना अच्छा लग रहा है इस एरिया में आके कि आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग विच आई गेट. पहले इन्हीं गलियों में, इन्हीं रोड पे आई यूज्ड टू राइड अलोंग और मतलब यहीं घूमा करते थे. इट्स लाइक आई रेज्ड ओवर हियर बिकॉज माय इनिशियल करियर आई वर्क फॉर 6 years इन चंडीगढ़. आज हमने पुलिस का नाका भी तोड़ दिया है. मतलब मैं कितना पार्ट वीडियो को रख पाऊंगा, कितना मैं इसको चॉप अप करूंगा, बट गुड शिट मैन. We are just roaming around lakeside. अगर कोई अकेला आ जाए तो उसका चलान पक्का कटेगा चंडीगढ़ के अंदर. बट while we are riding in group और मतलब पुलिस को भी already informed है that we just go and rally around the city. So there is no such problem as of now. They have a halt at this lake only, so that we'll go and just click on the photos and everything over here only. Yeah, we are getting onto the lake is on our right, and we are just moving on the straight. Gate has been specially opened for us, huh? No, entry is restricted, but Harleys are getting the entry. Now look at this, man. How many bikes you can think at one given point of a time, and here just look at this, man. Now see the number of bikers we have. Wow, that's amazing. So look at the bikers. You name the bike, the bike is there. Any of the Harley which exists, it is here. And that's my fat boy. Now see. Few of the bikes are here.
Then here, then this is the entire lot of the bikers. हाँ? बर्नआउट मारने लगे। अच्छा। To this Sukhna Lake. Now we are heading back to our hotel. So while people will go to their hotel, we'll take a leave and we will go directly to Delhi. Finally we are pushing back to home. So अभी Google दिखा रहा है 5 hours and 30 minutes to reach our home. So 6 घंटे में तो पहुंच जाएंगे. Time हो गया almost 12. So by evening we would be at our homes only. So it's a 2-day event, but we are living in a day only. So we just take a halt at this Mannat at Karnal. और यहाँ से हमने लंच कर लिया है. तो एक बार दिल्ली एंटर होने से पहले हम लोग रुकेंगे to just say final see off. तो अभी टाइम हो गया है 2. आई थिंक प्रॉब्लम वही जो मेरा टारगेट था. शाम में 6 बजे से पहले आई विल बी एट माई होम. तो फाइनली वी क्रॉस करनाल एंड जस्ट क्रॉसिंग दिस करनाल टोल. इसके बाद आफ्टर 20 किलोमीटर्स विल हिट दी पानीपत वाला टोल. तो पानीपत आफ्टर पानीपत तो वी आर लेफ्ट विद नॉट मोर देन 80 किलोमीटर्स. So far so good. The only target is कि we need to reach our homes before the sun sets. चलो अपना तो पानीपत तो क्रॉस हो गया और यहाँ से वी आर लेफ्ट विद 80 किलोमीटर्स ओनली. 80 घर तो 90 हो जाएगा. सो मेरे ख्याल से 2 घंटे लगने चाहिए अगर दिल्ली में ट्रैफिक नहीं मिलता है तो. सो वी आर टेकिंग हॉल्ट at this Mannat Samalkha to just have a glass of water. Done. So this is our last stop. इसके बाद सीधा घर ही पहुँचेंगे. और तो अंधेरा भी हो गया है तो GoPro will also not that effective क्योंकि 5 बजे ही आजकल शाम हो जाती है. So far so good. तो NHR तो अपना हो गया done. It has been done. So I request you to please subscribe to the channel because only 25% people or viewers are subscribed to my channel.